अवधारणा की ओर बढ़ने का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले स्वागत संबोधन के लिए श्रीमती एल.एस. चांगसन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक से अनुरोध करूं। Namaskar. Good morning to everyone, all the delegates present here today. Honorable Minister, Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Government of India, Dr.Mansukh Mandaviya ji. Honorable Member Health, Niti Aayog, Dr. V.K. Paul ji. Chairperson, National Medical Commission, Dr. B.N. Gangadhar ji. Dr. Pratima Murthy, Director, AIMS. Economic Advisor, Ms. Indrani Kaushal. General Daljit Singh, DG AFMS. Professor R.K. Dhamija, Director, IBHAS. Professor Rajesh Sagar, Professor AIMS. Secretary, Health and Family Welfare, Jammu and Kashmir. Missions Director of NHM of Gujarat, Ms. Ramya Mohan. Mission Director, Uttar Pradesh, Ms. Jewel. Mission Director, Assam, Ms. Lakshmi Priya. All the delegates present here. I take this opportunity to accord a very warm welcome to all of you who are with us today. 10th October is celebrated as World Mental Health Day all over the world. The theme for this year is Mental Health is a Universal Right, Human Right. To this one-day conclave, which has been organized by Ministry of Health and Family Welfare, I would first of all like to accord a very warm welcome with gratitude to our chief guest, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Shri Dr. Mansukh Mandaviya ji, for sparing his valuable time and gracing this occasion. Sir is serving as Union Minister for Health and Family Welfare since July 2021 and also as Minister of Chemical and Fertilizers of India. Under his leadership, several new initiatives have been taken in the field of health, including the launch of Tele-Manas in 2022. Next, I would like to welcome Dr. V.K. Paul. Sir himself is a professional, is a pediatrician and physician and scientist. Sir is currently serving as Member Health Niti Aayog since 2017 and has always been a great motivational force and been steering the ministry in a positive direction for many years. I would like to welcome our dignitary on the dais, Dr. B.N. Gangadhar, Chairman, National Medical Commission, but more so in as former director of NIMHANS. I especially welcome you, sir, to this conclave on World Mental Health Day. I would welcome Dr. Pratima Murthy, Director, AIMS, NIMHANS, and I'm grateful for her support for extending and her time to this gathering here today. I would like to welcome all the senior officials from the various ministries, from the states, the mission directors, and also our partners from various organizations, including WHO, who would be joining with us here today in this session or would be joining us in the technical sessions that follow. I would like to welcome all the teams from the states and the members of the Tele-Manas technical team, representative from IIT, Triple IT Bangalore, and also
all the other delegates who are present with us today. Mental health is a state of mental wellness that enables people to cope with the stresses of life and realize their abilities, learn and work and be a productive member of society. Mental health is much more than mere absence of mental disorders. According to the National Mental Health Survey conducted in 2015-16, there are around 150 million people in India who need intervention for mental disorders. The prevalence of mental morbidity of individuals above 18 years is 10.6%. 1 out of 20 people in the country suffer from depression. Around 1% are at high risk of suicide. 3 out of 4 persons with mental health disorders have disabilities affecting their day-to-day work, family, education, and other aspects of life. In this scenario, the government of India and the state governments have made several interventions, like the National Mental Health Program, which has been extended to the district mental health as mental health district program, and even recently up to the grassroots level at the sub-center in the Ayushman Bharat Health and Wellness Centers as one of the 12 service packages which are assured in the sub-center. We have the National Mental Health Policy, which was brought out in 2014. We are one of the few countries who have an exclusive mental health policy. The Mental Health Care Act 2017 also has been brought in legislation under which central and state mental health authorities have been formed, and also along with that, the mental health fund, mental health review board, and rules and regulations have been framed. At the tertiary level too, the government of India has been supporting the development of 25 centers of excellence and also 47 postgraduate departments in 19 medical colleges all over the country. Aside from this, we have a lot of collaboration with civil society organizations at various levels, and several interventions have been made in this regard. However, a lot remains uncovered, and it is hoped that in today's conclave, we shall be able to discuss at length various issues on promoting mental health and wellness and bringing about a change in this scenario. I'm happy to state that last year, on 10th August 2022, we launched Tele-Manas, which is a digital component of National Mental Health Program. The aim was to provide universal access to equitable, accessible, affordable, and quality mental health care through 24/7 telemental health service. Today, on the 1-year anniversary of Tele-Manas, Honorable Minister, Health and Family Welfare will release the Tele-Manas logo. The dedicated Tele-Manas teams from states and UTs worked relentlessly towards providing counseling service to the beneficiaries. And some of them, the states, the best performing states, will be felicitated today. I'm happy to share that over 3.4 lakh calls have been received in the course of 1 year, and at the almost at the rate of around 2,000 calls per day. And I'm happy that this service is reaching the intended beneficiaries, and hopeful that in the days, in the years to come, it will expand and reach many more who are in need of counseling and support, and who are facing mental stress and mental health concerns. Today, we will also witness the inauguration of new facilities at Nimhans, Bangalore, and this will be followed by 4 technical sessions with experts in the field. Again, I would like to extend a very warm welcome to Honorable Minister, sir, and to all the dignitaries and to all the officials and participants who have joined us in this conclave.
this one-day conclave. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुरोध करूंगी डॉक्टर वीके पॉल, मेंबर नीति आयोग से, कि वे अपने विचार हमारे समक्ष रखें। Namaste. Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandaviya ji, respected Dr. P.M. Gangadhar ji, Chairperson, National Medical Commission, Dr. Pratima Murthy ji, Madam L.S. Chanksan ji, Ms. Indrani Kaushal ji, Neha ji, distinguished colleagues from state governments who are present here, J&K, Assam, Uttar Pradesh, Gujarat, and more, senior academics, stakeholders in mental health, friends. We observe a very important day today, the World Mental Health Day. This is a reminder to us on 10th of October each year that illness is not only physical, but illness is also mental and invisible. And we need to rise as a society, as a nation, as a world community, individuals who have mental health issues, mild, moderate, or severe, or really challenging, urgent. That's why we are here today in this conclave. The invisibility of mental health in some ways compromises our capability of reaching being. Societal balance is also intricately linked to the feeling of being well mentally and spiritually. We heard from Madam Changsan the initiatives that the government has taken. This includes the path-breaking Mental Health Care Act of 2017, which built on the previous version of 1987. And there is a real consideration push, a policy push, and a programmatic push under the leadership of the Honorable Prime Minister and the stewardship of our Honorable Minister of Health and Family Welfare. Let no one feel alone. We are together. There is no health, as Neha said, no health without mental health. In this regard, I have discussions. I like to put forth before this audience this morning 7 points for consideration. सबसे पहले ये वे फॉरवर्ड है हम सबके लिए और कोशिश करें कि आज ये दिन हमें एक नई ऊर्जा से मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने की ताकत देगा, रास्ता दिखाएगा। हम उसी संकल्प के साथ माननीय मंत्री जी के रूबरू हुए हैं और उनकी गाइडेंस के अधीन इसमें तेजी लाएंगे और बहुत तेजी, because in the wake of COVID in particular, the need for mental health support and well-being has become center point. We also should not forget that mental health is also an SDG-enabled domain of work under the overall SDG goal number 3. So मेरे 7 पॉइंट ये हैं, हम तेजी से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को लागू करें। कुछ स्टेट्स ने अपने बोर्ड नहीं बनाए हैं, अथॉरिटी, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी नहीं बनाई है, कुछ स्टेट्स ने रूल्स भी नहीं बनाए हैं। आगे बढ़ते हुए 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। It will be our endeavor to work with all state governments to ensure that this year
We complete this agenda by persuasion, by request, by enablement. So this will be one area of work that we will all together work hard on. Second, improving services. We have district mental health program footprint in 743 districts, almost the entire nation. There is a specific budget. There is a post of a psychiatrist, a clinical psychologist, psychiatric social worker, and a nurse, psychiatric nurse, apart from other support staff and budget. Let's work hard in ensuring that this, in the next phase of our work, next budget, shall we say, we will work hard to ensure that we give more intensity, energy, and enablement to this program. So we will work hard to ensure that we have psychiatry trained doctors. If psychiatrist MD is not available, there is a system of training psychiatrists in psychiatry for medical officers. NIM has done a yeoman service in this regard. So we'll ensure that we have trained people. We will energize with new protocols, refresher courses, so that the district mental health program becomes a vibrant program. We would like to work to ensure that people know that we work hard at the district level. We will ensure that there is an increased footprint and reach of the people for our program, because it is now a mature program in programmatic sense. Optimality and quality and comprehensiveness will be our endeavor. Linked to this is perhaps the most important initiative that the union government will enable, and that is using the footprint of now very functional health and wellness centers, 1.6 lakh health and wellness centers. The first level primary care in mental health should be introduced. Steps have been taken, guidelines have been prepared, trainings have been initiated, but we would like state governments, academics, NGOs, and all of us to join hands that we create a primary healthcare system for people to reach next door through the health and wellness sector. Because mental health के लिए कोई 40 किलोमीटर जाएगा तो बहुत severe वाली बात है, वो अलग है, उसके ऊपर भी आते हैं. लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, मेंटल हेल्थ में ओल्ड एज के हमारे भाई बहन जो होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, बच्चे सफर करते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट बॉयज में प्रॉब्लम है, ये हम जानते हैं. ये दूर नहीं हो सकता. इसलिए हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर की लेयर बन गई है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिशन दैट हैज बीन अकम्प्लिश्ड, one of the most favorite mission of the Honorable Prime Minister, the most important, one of the most important flagship program in development in India, is truly building this strong foundation of primary health care for future India and today's India. अब उसके ऊपर हमने मेंटल हेल्थ का जो पैकेज है उसको अच्छी तरह से लेयर करना है. इसमें जो काम करने वाला है गाइडलाइंस हैं, लेकिन इसको जो स्केल अप कर रहे हैं उसके लिए मदद चाहिए. हमें एकेडमिक्स की मदद चाहिए कि उस मॉडल को शार्पन करके बताएं क्या हो. हमें कुछ टूल्स में हो सकता व्यवस्था करनी हो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठे हैं वो बात शुरुआत कैसे करें, काउंसलिंग कैसे करें. ट्रेनिंग हैज टू फोकस ऑन काउंसलिंग स्किल एंड व्हेन टू रेफर, when to seek out more help, because this CHO is a friend of that population. 7,000 5,000 population की वो दोस्त है, next door है. वहाँ हमें इस पर्पस के लिए भी अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यूज हों और हमारे प्रोवाइडर उसकी भूमिका निभाएं. ये एक इम्पॉर्टेंट काम इस साल हम करेंगे मिलके और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अब वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है. उस प्लेटफॉर्म पे मदर चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज शुरू हो हमेशा से रहे हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का काम और बढ़ गया है. अब हम मेंटल हेल्थ उसके ऊपर एज अ हाई प्रायोरिटी डालने की कोशिश करेंगे. एंड प्लीज जॉइन हैंड्स टू क्रिएट अ मॉडल which will be a sustainable model, which satisfies the families, the communities, and which actually should be the role model as a role model in primary mental health care for the world. और ये काम हम उस पॉइंट पे आ गए. पहले प्लेटफॉर्म बन रहा था, अब वो बन गया, इंफ्रा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, CHOs are in place. So एक स्पेशल एफर्ट और मिशन की तरह इस पे काम करेंगे. ये मेरा सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट का और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके.
The third request and third very important area of work is to create bigger workforce. हमें साइकाइट्रिस्ट चाहिए, हमारे पास 0.6 पर लाख साइकाइट्रिस्ट है, कम से कम 2 होने चाहिए। और जैसे जैसे हम विकसित भारत बनेंगे तो शायद 3 की भी जरूरत होगी, क्योंकि सोसाइटी और इसकी डिमांड करेगी, लेकिन 2 तक तो बढ़ना ही है। उसके लिए जो हमारी पाइपलाइन है, दैट्स अबाउट 1050 पीजी सीट्स ओनली बिटवीन द डीएनबी एंड द एनएमसी सिस्टम। 1100 से कम है, ये लेके चलिए। इसको हमें जरूर बढ़ाना पड़ेगा, ये बहुत कम है और उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है कि उसका क्राइटेरिया जो है वो 150 बेड का स्टूडेंट का होता है, इनटेक तभी लागू हो पाता है। उसकी करेक्शंस एनएमसी की लीडरशिप ने करी हैं, उसको मैं चाहूंगा कि वो लागू करें और रास्ता खोलें, बिकॉज अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ इज लार्जली एम्बुलेटरी केयर, लार्जली एंड देयरफॉर बेड डिपेंडेंस 30 बेड 40 बेड, ये सब पुरानी बातें हो सकी हैं। तो एक तो उस पाथवे पे बढ़ना है और उसके लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज जिसको आज वो क्राइटेरिया फुलफिल्ड है उसको अप्लाई करना है MD के लिए, जितनी सीटें भी ले सकता है। ये नहीं हो सकता है कि हमारे पास कैपेसिटी है और हम साइकाइट्री की सीट नहीं मांग रहे, हम कार्डियोलॉजी की सीट मांग लेते हैं, हम न्यूरोलॉजी की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मांग, स्टैटिस्टिक्स की मांगते हैं, साइकाइट्री भूल जाते हैं। तो जहां भी कैपेसिटी की जिस भी मेडिकल कॉलेज में साइकाइट्री के लिए ठीक है, टिक हो गया है, उनको ऑलमोस्ट यही कहना चाहिए कि करना ही करना है। और इसी तरह से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू प्राइवेट सिस्टम से और सरकारी सिस्टम से हमें आगे बढ़ना है। डिप्लोमा इन साइकियाट्री हैव बीन स्टार्टेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसको आगे बढ़ाना है। और इसमें स्पेसिफिकली जो हमारी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, हम सब स्टेट में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट की लीडरशिप को कि प्लीज, वी हैव हेल्ड अ मीटिंग विद 19 ऑफ देम, दोज इंस्टीट्यूशन, जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें फैकल्टी भी होती है, पेशेंट भी होते हैं, रेपुटेशन भी होती है, वहां पे जितना भी एमडी कोर्स हो सके या डीएनबी हो सके वो हमें करना है, सैचुरेशन करना है। ये नहीं है कि कैपेसिटी हमारी है 10 सीट की, हम 2 पे बैठे हुए, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज दिस पाइपलाइन इज वेरी थिन। आज नहीं मेहनत करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और हर साल में अगर हम 1000 सीटें भी कम दे रहे हैं तो देखिए कि उसका कितना नुकसान होता जा रहा है। दिस इज एन अर्जेंसी एंड लाइकवाइज वी हैव टू बिल्ड द वर्कफोर्स फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, psychiatric social work, as well as psychiatric nursing, for which nurse practitioners course is also being envisaged. There has been a sort of a setback because the national education policy has eliminated the MPhil courses. So clinical psychology and psychiatric social work training courses used to be MPhil. I'm happy to state that under the guidance of our Honorable Minister Saab and the team in Ministry of Health and Family Welfare, working together with NIMHANS and other leaders, from many of you are here, a way forward has been found. So there will be a way forward. If MPhil is not to be done, what would be the structure of the course or courses? This will be brought forth to you very soon, but I let you know that we have a solution. We want the final meeting or concurrence of all the participants at the meeting, but assuring you that compatible with NEP, we will have a very, I would say, ambitious and highly doable, actionable course system for these two professionals, which are so very needed, very much needed. The fourth point is Tele-Manas को स्ट्रेंथन करना, उसके ऊपर लंबी चर्चा होगी। आज तो मैं सिर्फ बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री मैम का, जिन्होंने टेलीमानस को बजट दिया, अनाउंसमेंट करी और पिछले साल उसके ऊपर जो काम हुआ है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। उसके इश्यूज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इश्यूज ऑफ वर्किंग 24/7, ये हमारे इश्यूज हैं, उनकी बात डिटेल में होगी। आई लाइक टू नो दैट आई कॉल्ड टेलीमानस हेल्पलाइन yesterday to test it, and I reached the node in Uttar Pradesh, and I got beautiful counseling, posing as a 20-year-old chartered accountant who is struggling to compete in examination and being depressed. So this system is working. I assure you, sir, under your guidance, ये काम हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश को मैंने रीच आउट किया था उस नोड से। So happy to tell you that. So we'll strengthen the telemedicine. इसको हमें ब्रांड बनाना है। हर स्कूल के बच्चे को पता होना चाहिए, कॉलेज के बच्चे को पता होना चाहिए, वर्क प्लेस पे जो काम करते हैं उनको पता हो। My sixth suggestion
work area is to reach out to the youth, young people, adolescents, young people in colleges. So we need to work to reach out to this future of India. There are special kinds of stresses for this segment of our population. The work areas, lack of sleep, the internet addiction, internet issues, internet bullying. If it becomes worse, much worse, situation is emerging. So we have to address this through a comprehensive approach, through our national program, through our school health program, and through program outreach into the universities and colleges. The next point is truly to convert this mental health mission into a Jan Andolan. Without people's participation, how will we succeed? We cannot succeed in any health program, or at that matter, in any development program, without involvement and participation and of the people. So इसको जन आंदोलन बनाने के लिए, सबके साथ जुड़ने के लिए हमें मेहनत करनी है, डिस्टिग्मेटाइज करना है मेंटल इलनेस को, और डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन माइल्ड प्रॉब्लम्स versus severe problems such as schizophrenia and bipolar, which needs hospitalization, which is 1% of prevalence. The other one is the remaining 10%. So उनको institutions में पहुंचाना है, वो सब families, communities, पंचायती राज, सारे समुदाय इकट्ठे होंगे तभी हम कर पाएंगे. वो वहां नहीं रखने, उनको इलाज करना है, वो आज भी इलाज संभव है, कोई छूटा नहीं चाहिए. जन भागीदारी therefore is stakeholders यहाँ हैं. And last but not the least, we need a framework for monitoring mental health well-being. The indicator in SDGs is only suicide rate. That's a very, very extreme indicator of mental well-being. It cannot be. So I urge the academics who are present here to think about indicator of mental health, which are mental well-being indicators. एक स्कूल का माहौल मेंटल हेल्थ से सपोर्टिव है तो उसका इंडिकेटर क्या हो? एक पंचायत का या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अराउंड जो पॉपुलेशन है, उसको हम कहेंगे यहाँ अच्छा मेंटल हेल्थ है, उसका व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ? मैं चैलेंज करता हूँ कि प्लीज आप इसके बारे में सोचिए, बिकॉज सुसाइड को हम इंडिकेटर एक नहीं बना सकते, उसके पाथवेज हैं, उसको एड्रेस करना है, अच्छी तरह से एड्रेस करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मेंटल वेलबींग जैसे बाकी का इंडिकेटर पॉजिटिव हेल्थ के होते हैं, proportion of hypertensive individuals in a population, आज अगर 30 हैं तो कल 15 हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमने इंप्रूवमेंट करी. How do we measure our improvement? It cannot be only based on suicide, because there is a human capital cost, social capital cost to ongoing mental health stress, which may be mild or moderate. Extreme situations are only tip of the iceberg. So I would request academia present here to think about it. If it needs this course with the World Health Organization, we should work. I had the opportunity to bring this to the attention of WHO DG, Dr. Tedros as well. Globally also, there is no such indicator. Can we work in that direction? Because then we know what to improve. With these words, I'm so grateful to the Ministry of Health for the kind invitation. In the presence of the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, it has been my privilege to put forth ideas for joint action. We are together in this. There is only one Team India, and that Team India will ensure optimum good mental health in our nation. Dhanyavad. Thank you. धन्यवाद सर, आपके इन शब्दों से हम सबको एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला है और हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि हम इस पे जरूर काम करेंगे. आज से ठीक 1 वर्ष पहले मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल हेल्थ में भारत सरकार ने टेलीमानस के रूप में अग्रणी शुरुआत की थी. घर पर बैठे फोन के जरिए मानसिक समस्याओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराया गया. आज टेलीमानस की सेवाएं देश के 34 राज्यों में प्रदान की जा रही हैं. आइए देखते हैं टेलीमानस पर एक छोटा सा वीडियो. उसने कहा कि वो ठीक है और यही चूक हो. चाहे बच्चे हो या बूढ़े, युवा लड़के लड़कियां या शादीशुदा दंपति, सोच और अकेलेपन ने सभी को घेर लिया है. का एहसास लोगों को कोविड-19 महामारी ने दिलाया.
कि मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और इसके सही इलाज और परामर्श से जुड़ी सेवाओं का मिलना कितना जरूरी है। मन की बात में डिप्रेशन के बारे में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सरकार की ओर से उच्चतम प्रतिबद्धता है। मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। एक मनोवैज्ञानिक माहौल पैदा करना होता है और उसकी शुरुआत होती है, पहला मंत्र है डिप्रेशन के सप्रेशन के बजाय इसके एक्सप्रेशन की जरूरत है। अपने साथियों के बीच, मित्रों के बीच, माँ बाप के बीच, भाइयों के बीच, टीचर के साथ खुल करके कहिए आपको क्या हो रहा है। देश भर में सभी नागरिकों के लिए अपनी पहुंच और कवरेज का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डिजिटल पथ पर कदम रखा है, जिसके अंतर्गत डिजिटल समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली-मानस की शुरुआत की। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से देश भर में काउंसलिंग, मनोविज्ञान परामर्श सहित अनगिनत सेवाएं उपलब्ध करवाकर राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती दी जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी और परामर्श के लिए लोग टोल फ्री नंबर 1800-891-4416 या शॉर्ट कोड 14416 पर कॉल कर सकते हैं। मेन ग्रुप जो ज्यादातर कॉल्स आती है वो 16 to 35 के बीच में आती है ज्यादातर। तो जो हम आजकल ज्यादा रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादातर एग्जाम एंजाइटी के रिलेटेड होते हैं। जैसे रैपो बिल्ड करना पहले होता है ताकि जो आपका पेशेंट है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाए, ताकि वो आपको बता पाए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से हो रही है। टेली-मानस लोगों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करता है और लोगों की सुविधा के लिए ये कई भाषाओं में भी उपलब्ध है। यहाँ कॉलर को उनकी जरूरत के अनुरूप परामर्श दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए टेली-मानस को टेली कंसल्टेशन नेटवर्क ई-संजीवनी के साथ जोड़ा जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, बल्कि इस पर खुलकर बात करें। याद रखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं अब माननीय मंत्री जी से अनुग्रह करूंगी, अब विमोचन रिमोट का बटन दबाकर करें। This logo symbolizes individuals seeking help using the digital media. The branching tree represents the intricate network of neurons, illustrating growth and resilience. The green color symbolizes mental health, wherein blue signifies use of technology. The number 14416 is a short code for accessing Tele-Manas services, which is displayed prominently on the logo. इस लोगो के विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। निम्हांस, an institute of national importance, is a premier institute not just in India but across the world in field of psychiatric and neurological disorders. Today, to further expand the services, 3 new facilities are being inaugurated in Nimhans: the Platinum Jubilee Complex, Platinum Jubilee Auditorium and academic facilities, administrative complex, and Center for Brain and Mind, set up with support of Rohini Nilekani Philanthropies. माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि रिमोट का बटन दबाकर इन तीनों फैसिलिटीज का उद्घाटन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी के लिए स्वास्थ्य की कल्पना की है। स्वास्थ्य देखभाल की किफायती उपलब्धि और सशक्त बुनियाद